Hello everyone, I'm Divyanshi Pathak. I'm second year engineering student at DAVV University Indore. I've made this presentation on interpolation and numerical integration under the guidance of Mr. Shaligram Prajapat Sir. So, without further ado, let's get into the video. Firstly, what is interpolation? Interpolation is a technique of estimating values of a function for any intermediate value of the independent variable. Or we can also say that if the value of function is to be found at some point y and y is not one of the tabulated point, then value is estimated by using non-values of function f of x at surrounding points. This is called interpolation. लेमन लैंग्वेज में हम ऐसा बोल सकते हैं जैसे हमें एक क्वेश्चन गिवन है फंक्शन हमें एक फंक्शन की वैल्यू फाइंड करनी है एट अ पर्टिकुलर पॉइंट बट वो पॉइंट हमें उस फंक्शन की टेबल में गिवन नहीं है सो विद द हेल्प ऑफ सराउंडिंग पॉइंट वी विल फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ द फंक्शन सो हम ऐसा कह सकते हैं कि फंक्शन की अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड करना विद द हेल्प ऑफ सराउंडिंग पॉइंट इज कॉल्ड मेथड ऑफ इंटरपोलेशन. Basically, there are four types of interpolation. First, Newton-Gregory forward interpolation, Newton-Gregory backward interpolation, Newton-divided difference interpolation, and Lagrange interpolation. We will see all of this one by one. Firstly, Newton-Gregory forward interpolation. This formula is particularly useful for interpolating the values of function near the beginning of set of given values. हमें फंक्शन की वैल्यूज अगर इनिशियल टेबल के इनिशियल पॉइंट्स पे या स्टार्टिंग के सेट ऑफ पॉइंट्स पे निकालनी है तो हम इस मेथड का यूज करेंगे फॉरवर्ड इंटरपोलेशन. हियर h इज कॉल्ड द h इज द डिफरेंस बिटवीन द इंटरवल एंड a इज द फर्स्ट टर्म. This is the formula of Newton-Gregory forward interpolation with the help of which we evaluate the value of function. We evaluate Newton-Gregory forward interpolation with the help of Newton forward difference table. This is the Newton forward difference table. Newton-Gregory backward interpolation. This formula is useful when the value of function is required near the end of the set of table. जैसे कि न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन में हम इनिशियल पॉइंट्स पे अगर हमें फंक्शन की वैल्यू निकालनी होती थी तो हम उसको यूज करते थे. वैसे ही अगर टेबल के एट द एंड ऑफ द टेबल के सेट ऑफ पॉइंट्स पे हमें फंक्शन की वैल्यू निकालनी है तो हम बैकवर्ड इंटरपोलेशन यूज करेंगे. हियर ऑल्सो h इज द इंटरवल ऑफ डिफरेंस and difference between the interval, and here en is the last term. So this is the formula for Newton backward interpolation. Here this sign is all known as DAVV law. We evaluate Newton-Gregory backward interpolation with the help of backward difference table. This is backward difference table. Now, advantages of Newton interpolation. Newton forward and backward interpolation can be used to evaluate high degree polynomial. It is computationally intensive. Disadvantages: it is applicable to equidistance values of function. Like अगर हमें equal interval of function given है तो हम Newton interpolation का use कर सकते हैं. We cannot use this method for unequal intervals. Sometimes they tend to overfit data. So these were some advantages and disadvantages of Newton interpolation. Now let's move forward. Newton divided difference interpolation. Newton divided difference interpolation is an interpolation technique used when the interval difference is not same for all sequence. So this is also used for unequal interval of function. Suppose f of x0, f of x1 till f of xn with the n plus 1 value of function f of x corresponding to the arguments x0 to xn where interval difference are not same. Okay. सो इसको भी हम अनइक्वल इंटरवल के लिए ही यूज करते हैं. देन द फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस इज गिवन बाय f of x0, x1 इक्वल टू f of x1 minus x0 upon x1 minus x0. दिस इज फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस. सिमिलरली हम सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस निकालेंगे f of x1, x2 minus f of x0, x1 upon x2 minus x0. इस तरह से हम सारे डिवाइडेड डिफरेंस निकालेंगे और जब हम इसे टेबल में पुट करेंगे तो एक हमें डिवाइडेड डिफरेंस टेबल मिलेगी लाइक दिस, एंड वी पुट द वैल्यूज ऑफ दिस डिवाइडेड डिफरेंस इन दिस फॉर्मूला to evaluate the value of function. This is the function. This is the formula for Newton divided difference.
Now Lagrange interpolation. Lagrange interpolation is used to evaluate Lagrange polynomial, like it is an nth degree polynomial expression to the function. The interpolation method is used to find the new data points within the range of a discrete set of known data points. It is used for unequal interval or unevenly spaced पॉइंट्स. हम इस लेग्रांजे इंटरपोलेशन मेथड का अनइक्वल इंटरवल के लिए यूज करते हैं. हम न्यूटन ग्रेगरी इंटरपोलेशन का ये ही डिसएडवांटेज था कि हम उसको सिर्फ इक्वली स्पेस्ड पॉइंट के लिए यानी कि इक्वल इंटरवल के लिए यूज कर सकते हैं, डिस्पाइट हम लेग्रांजे इंटरपोलेशन को अनइक्वल इंटरवल के लिए यूज करते हैं. ओके, ये लेग्रांजे इंटरपोलेशन का फॉर्मूला है. आई नो ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग रहा है, बट हम इसको ऐसे, इट इज इजी. अगर हमें फर्स्ट टर्म निकालनी है इस फॉर्मूले की, सो फर्स्ट टर्म निकालने के लिए इन न्यूमरेटर हम एक्स जीरो को छोड़ के सभी टर्म से एक्स को माइनस करेंगे, लाइक एक्स माइनस एक्स वन, एक्स माइनस एक्स टू टिल एक्स माइनस एक्स वन. एंड इन डिनोमिनेटर, जैसे कि फर्स्ट टर्म है तो एक्स जीरो में से हम सारी टिल एक्स एन को माइनस करेंगे इनटू वाई जीरो. सिमिलरली अगर हमें सेकेंड टर्म निकालनी है तो एक्स वन को स्किप करके हम सारी टर्म्स को माइनस करेंगे, एंड डिनोमिनेटर में भी एक्स वन को स्किप करके एक्स वन में से हम सारी टर्म्स को माइनस करेंगे इनटू वाई वन. सिमिलरली हम ऐसे सभी फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं फॉर ऑल टर्म्स. Advantages of Lagrange interpolation: the answer for higher order polynomial will be more accurate. मतलब Lagrange interpolation से हमें आंसर accurate मिलता है, approximately similar to the exact solution. Disadvantage of Lagrange interpolation: the formula for polynomial of high degree includes significant number of multiplication, making the operation sluggish. Like calculation is थोड़ा सा difficult. Now numerical integration. In numerical integration, we will learn basically two rules. First is trapezoidal rule and second is Simpson rule. Simpson rule is also further divided into two rules, Simpson 1/3 and Simpson 3/8 rule. Okay, we can derive trapezoidal rule with the help of Lagrange and Newton divided difference formula as well. So what is trapezoidal rule? Trapezoidal rule is a trapezium rule, or trapezium rule is a technique for approximating the definite integral in numerical analysis. Like it is a method to evaluate definite integral. Trapezoidal rule is an integration rule used to calculate the area under the curve. सो ये इंटीग्रल को कैलकुलेट करने के लिए है, तो मतलब कि इट विल इवेल्युएट द एरिया अंडर द कर्व. और हम इसे ट्रेपेजॉइडल रूल इसलिए बोलते हैं बिकॉज द कर्व कंप्राइजेस ऑफ टू स्मॉल trapeziums, and the summation of all the area of small trapezium will give the area under the curve. That's why it is called trapezoidal or trapezium rule. The trapezium rule is mostly used in numerical analysis process. Okay. Now Simpson's rule. Simpson one-third rule is an extension of trapezoidal rule only, in which integrand is approximated by second order polynomial. In trapezoidal, it is first order polynomial. In Simpson's one-third rule, it is second order polynomial. Simpson rule can be derived in the various way from Newton dividend difference and Lagrange polynomial, as I said earlier. And Simpson one-third rule is defined by this. F of x is integrated within the range a, lower limit a, upper limit b, is equal to h by 3. First term plus last term का summation plus 4 into sum of odd terms plus 2 into sum of all even terms. So this is the basic formula for evaluating definite integral with the help of Simpson one-third rule. Now, Simpson 3/8 rule. Another method of numerical integration is Simpson 3/8 rule. It is also known as second rule of integration. Okay. It is completely based on cubic interpolation rather than the quadratic interpolation. Simpson 3/8 rule is given by this formula. Function f of x is integrated under the lower limit a, upper limit b
equal to 3h by 8, sum of first and last term y0 plus yn plus 3, sum of all non-multiples of 3 plus twice sum of multiples of 3. This is the basic formula of 3/8 rule. We put values in this formula to get the definite integral of function under the limit a comma b. Okay, so that's all for today's video. Thank you so much for watching. If you really liked my video, please like, share, comment, and subscribe to my channel. Also, in further videos, we will be solving some important multiple choice question on this topic. Okay, so please stay tuned.